We are here with yet another innovation. This time, speaking practice for IELTS. In this video, you will find some questions and then our suggestions on how to handle them. I am Vivek Mehra from your favorite YouTube channel IELTS Mehra. This is how you handle this video. A. I will speak a question and say pause the video. And I will say pause the video and answer. You should immediately pause the video and answer the question yourself before you listen to my suggestion. B. You can even record yourself as you are answering to re-listen to what you said. C. Now listen to our suggestion. We will explain the vocabulary used. After you have spoken, start the video and listen to our suggestion. D. You can make sentences of the word explained and bring them either to the classroom or type them in the comment box. We will respond as and when possible. E. Please do not try to memorize the answer. Just use the video to enhance your own natural flow of English. F. It is important to follow all the steps. How do you feel about birds? Pause the video and answer. How do you feel about birds? The question is in simple present tense. And the answer is, I think there would be hardly anyone. Hardly anyone means कि शायद ही कोई हो who does not love birds. नोट कीजिए यूसेज ऑफ does not and आगे verb के आगे s नहीं है. These feathered friends color our world and make it musical. I too love having them around. Make sentence of hardly anyone. How do people of your country feel about birds? Please pause the video and answer before listening to my suggestion. How do people in your country feel about birds? अब as I have already mentioned, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में भी इसका कुछ पार्ट आंसर दे चुका हूँ, तो आई विल से एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नोट करिए. एवरीवन लव्स, या लिखा हुआ है लव, पर एक्चुअली इट शुड बी लव्स birds. Everyone means हर एक. Everyone loves bird, and so the citizens of my country. Now people of your country की जगह पे यूज किया citizens of my country. यहाँ पर citizens of my nation भी आप बोल सकते हैं. Are no exception. Are no exception मतलब वो भी सबकी तरह ही हैं. जब हम कोई काम करते हैं और हम कहते हैं मैं भी, I am no exception, मैं भी सबकी तरह ही हूँ. They too adore them and even worship them. वो भी उनको प्यार करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं. Adore is another word for love. To make sentences of adore. Are there many birds near your home? Please pause the video and answer before listening to my suggestion. Okay. Are there many birds near your home? क्या आपके घर के पास बहुत सारे पंछी हैं? There are a lot. अब नोट करिए, अगर आप लॉट बोलेंगे तो आगे ए जरूर लगाएंगे. अगर आप बोलोगे देयर आर लॉट्स तो फिर आगे ए नहीं लगाएंगे. आप ये भी कह सकते हैं देयर आर क्वाइट अ फ्यू. क्वाइट अ फ्यू का मतलब काफ़ी, लेकिन फ्यू नहीं, अ फ्यू लगाना है. फ्यू का मतलब है कोई भी नहीं, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं. सम आई सी एवरी डे. कुछ को तो मैं रोज ही देखता हूँ. लाइक पिजन्स, स्पैरोज एंड क्रोज. सम आर रेयरर साइट्स. कुछ इनसे कम दिखते हैं, रेयरर, लाइक ईगल्स एंड पैरट्स.
हु अपीयर सीजनली, जो सीजन के सीजन आते हैं। हाउएवर, नोट करिए कॉमा, आई हैव नोटिस दैट बर्ड्स ऑफ ऑल स्पीसीज आर डिक्लाइनिंग इन नंबर। ये मैंने देखा है कि हर तरह के बर्ड्स जो हैं वो अब उनका नंबर कम हो रहा है। मेक सेंटेंसेस ऑफ हाउएवर। हैव यू सीन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स? पॉज द वीडियो and answer before you listen to my suggestion. Okay. Have you seen many different kinds of birds? You will notice the question is in present perfect tense. And you will also have to answer a bit of it in present perfect tense. I am a city bird myself, and we do not have many kinds visiting us. सिटी बर्ड का मतलब है मैं तो खुद शहर का रहने वाला हूँ और हमें बहुत सारे पंछी नहीं आते हमारे वहाँ। Besides the number mentioned above, besides मतलब इसके अलावा, beside होता है आपकी साइड पे ना, he lives beside me and besides this मतलब इसके अलावा। तो मैंने जो ऊपर बोल दिए हैं उनके अलावा कोई बहुत खास पंछी हमारे सिटी में आते नहीं। However, occasionally I have had a chance to visit places like Sukhna Lake, which is located in Chandigarh. नोट करिए कैसे have और had इकट्ठे लगे हुए हैं, तो आप भी उनका सेंटेंसेस बनाएंगे have और had के इकट्ठे लगे हुए हैं। I have had a chance to visit places like Sukhna Lake, which is located in Chandigarh, जो कि चंडीगढ़ में है, the capital of my state, and there I have seen many exotic varieties. Exotic मतलब जो unknown है, exciting है, हमें बहुत अच्छी लगती हैं, इस तरह की कई किस्में मैंने देखी। exotic अनकॉमन है, दूर से आई हैं, which temporarily migrate from their natural habitats. Natural habitats जो उनके असली घर हैं, जहाँ पर वो कुदरती तौर पर रहते हैं, वहाँ से वो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। इन द कोल्डर क्लाइम्स यहाँ क्लाइमेट्स की जगह यूज हुआ है। एल्बीट हाउएवर का एक पार्ट है, हाउएवर का ही सिनोनिम है। आई डू नॉट नो देयर नेम्स, हालांकि मुझे उनके नाम नहीं पता। प्लीज मेक सेंटेंसेस ऑफ सिटी बर्ड्स, occasionally and exotic. Do birds have any particular significance in your country? Please pause the video and answer before you listen to my suggestion. Okay. Do any birds have any particular significance in your country? In my country, India, is a multicultural, multi-religious country, and we have all kinds of animals, and यहाँ भी नहीं आएगा, and all kinds of animals play many roles in our country, in our nation, in our society, ऐसे भी बोल सकते हैं, in our culture, ऐसे भी बोल सकते हैं। Birds are also worshipped on many occasions. बर्ड्स की भी पूजा होती है कई बार। बी इट एन आउल और एन ईगल, चाहे वो एक आउल हो चाहे वो एक ईगल हो। दे आर सपोज टू कैरी सम ऑफ द गॉड्स ऑन देयर बैक्स, उनका काम है कि कुछ जो भगवान है उनको अपनी पीठ पर लेके जाते हैं, ऐसे हमारी कहानियों में लिखा हुआ है। फर्दरमोर द पीकॉक इज अ नेशनल बर्ड। फर्दरमोर के बाद अगर आप लिख रहे हैं तो कॉमा होना चाहिए, अगर आप बोल रहे हैं तो पॉज होना चाहिए। आप सेंटेंस बनाइएगा फर्दरमोर का। Do you think birds should be protected? Please pause the video and answer before you listen to my suggestion. Do you think birds should be? And should be देखिए, should be की यूसेज है should plus be plus verb की थर्ड फॉर्म, क्योंकि this is passive voice.
ऑफ कोर्स, आप भी ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स दिस वन इज अ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर मतलब इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। I firmly believe that all species of living beings are equal stakeholders in this planet, and birds are no exception. Again, I have used no exception to explain कैसे यूज होता है ये। हाँ बिल्कुल, मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि सबका इक्वल स्टेक होल्डर्स, सबका बराबर हिस्सा है इस दुनिया में, और बर्ड्स कोई अलग नहीं है। We would be infinitely much poorer if we do not try to save each and every type of bird. हम बहुत ही ज़्यादा और गरीब हो जाएंगे अगर हमने हर तरह का पंछी बचाने की कोशिश ना की। फ्रॉम द मैग्निफिसेंट ईगल टू द कलरफुल पैरट, जो शानदार ईगल है, बाज है, चील है, उससे लेके जो रंगदार पैरट है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम जो होता है, जिससे कुदरत ने हमें बनाया है, हर जीव जंतु उसमें ज़रूरी है। उसमें वो ज़रूरी है कि वो भी बर्ड्स भी हों। तो मेक सेंटेंस ऑफ शुड बी।